Hello friends, Namaskar. Quadratic Equations, Chapter 4th of Class 10th NCERT book. Students, today our topic is Nature of Roots. But first, let us have a recap of this chapter. In this chapter, we learnt about quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation because highest power of variable is 2. Degree of equation is 2, so it is quadratic. And condition is numerical coefficient of highest power means x square must not be equal to 0. If a is equal to 0, then it becomes a linear equation. Second is roots or solution of quadratic equation. Roots and solution have same meaning. x की वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल बना दे. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0. देन दोज वैल्यूज ऑफ x आर नोन एज roots or solution of our quadratic equation. It is standard form of a quadratic equation. Third, methods to solve or to find out roots of a quadratic equation. इक्वेशन को सोल्व करना और रूट्स फाइंड आउट करना सेम थिंग. फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हमने x की टर्म को स्प्लिट अप किया था. x न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x उसको स्प्लिट अप किया था, फिर लीनियर फैक्टर्स बनाकर x की वैल्यू फाइंड आउट की थी. सेकंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट बनाया था, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था, फिर हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को किसी आइडेंटिटी के होल स्क्वायर के इक्वल बनाया था. देन वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वेयर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x and c is constant term. When you will compare with general form, then you can find out easily. Or x is equal to minus b plus minus under root d. Then what is d? d is equal to b square minus 4ac. Students, इस फार्मूले को यूज करके हम अपने रूट्स की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. प्लस यूज करके वन वैल्यू एंड माइनस यूज करके सेकेंड वैल्यू. देन व्हाट इज डी? कोफिशिएंट का वो काम जो हमें इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानकारी दे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. सो टुडे we will use it. We will use discriminant. So students, today our topic is nature of roots means हमारे रूट्स कैसे होंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे. If d is equal to 0, then we get 2 equal roots. Then student, we get 2 equal roots. Now student, look carefully. X is equal to minus b plus minus under root d by 2a. But if d is equal to 0, then x is equal to minus b by 2a and minus b by 2a. If d greater than 0, then we have two distinct means different real रूट्स. तो हमें हमारी इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे. इफ d लेस देन 0 मीन्स d विल बी नेगेटिव, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. अब स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है? स्टूडेंट्स अभी तक आपने रियल नंबर्स तक स्टडी किया है. रियल नंबर्स मीन्स रैशनल plus irrational. This is your real number set. Students, to know about nature of roots and importance of d, let us do some questions of exercise 4.4. So question number 1 is find the nature of roots of the following quadratic equations. दोनों इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या कोई रियल रूट नहीं होगा. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. स्टूडेंट्स, रियल रूट तभी एग्जिस्ट करेगा when d greater than and equal to 0, because if d less than 0
then no real roots exist. So first part is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. When we compare with general form, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5. स्टूडेंट्स, हमें रूट्स के नेचर के बारे में कौन बताता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट. सो लेट्स फाइंड आउट डी. माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वेयर 9, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40. डी इज इक्वल टू माइनस 31, दैट इज less than 0. Since D less than 0, so no real roots exist. स्टूडेंट्स, हमें जब रियल रूट एग्जिस्ट करते तभी फाइंड आउट करने थे, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो रियल रूट्स? लेट अस फाइंड आउट roots of this quadratic equation. So x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a means we are using quadratic formula. So when we solve it, we get 3 plus minus minus 31 under the root by 4. It means minus 3 plus minus 31 under the root by 4 and minus 3 minus minus 31 under the root over 4. Students, we got x is equal to minus 3 plus minus minus 31 under the root by 4. So we can write it minus 3 as it is, but minus 31 is equal to minus 1 into 31. 31 under the root as it is, but minus 1 under the root is equal to iota. And this is not a real number. So x is equal to minus 3 plus under root 31 iota by 4 and minus 3 minus 31 iota by 4 not real. These are imaginary. Hence x is complex number. Hence we can say roots are not real. Second part, 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. When we compare it with general form, we get a is equal to 3, b is equal to minus 4 under root 3, c is equal to 4. Now to find out nature of roots, we have to find out value of d. d is equal to b square minus 4ac. b means minus 4 under root 3 whole square minus 4a 3 c 4. Now minus 4 under root 3 into minus 4 under root 3, negative negative positive, 4 4 is 16 into under root 3 under root 3. It will become 3, 16 3 is 48 minus 4 3 is 12 4 is 48 is equal to 0. Since d is equal to 0, we have two equal real roots of this quadratic equation. Since d is equal to 0, so minus b plus minus under root d by 2a, quadratic formula. d is equal to 0, so it becomes minus b by 2a minus b by 2a minus b by 2 into a minus b 2a. So both are equal, negative negative positive, and at the place of 4, 2 into 2 into under root 3. And in denominator 2 into under root 3 into under root 3, so that our calculation will be easy. 2 under root 3, 2 under root 3 cancel. In numerator we get 2 and in denominator under root 3. Roots of 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0 are 2 under root 3 and 2 under root 3. Students, third part, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. When we compare with general form, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b minus 6 and c constant term 3. To find out nature of roots, d b square minus 4ac, after putting values of a, b and c, we get d is equal to 12. Since 12 is greater than 0, it means d greater than 0. So two distinct real roots exist, and those are minus b plus minus under root d over 2a, means we are using quadratic formula. Now putting the values of a, b and d, minus as it is, at the place of b, minus 6 plus minus under root 12,
D. 2 into 2. So we can write negative negative positive 6 plus minus at the place of under root 12. 4 3s are 12. So we can take 2 outside square root of 4. So 6 plus minus 2 under root 3 over 4. Now students, we can take 2 common. So when we will take 2 common, so 6 divided by 2, 3 plus minus 2 under root 3 divided by 2 under root 3 by 4. 2 2s are 4. So 3 plus minus under root 3 over 2. Roots are 3 plus under root 3 by 2 and 3 minus under root 3 by 2. स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड एंड थर्ड पार्ट सोल्व करते हुए पहले वीडियो बनाई थी, बाय मिस्टेक वो नहीं बन पाई थी. सो नाउ आई थिंक यू गोट इट. Thank you for watching. Have a good day. If you really getting something, then please only share and subscribe.